Hello dear student, welcome all of you on our YouTube channel. Dear student, today for B.Sc. second year student, we are going to take a class of B.Sc. second year student. B.Sc. second year paper is group theory. Paper is group theory, 7th paper, and period is 7, paper 7, period 7th, and B.Sc.S.Y. semester 3rd. So student, remember one thing, that is period number. This is the period 7. Before this period we have discussed 6 period, but by mistake we does not give their numbering. Okay, so from this lecture we mention particularly we mention period number. So this is the period number 7. Remember this. Next period is 8, 9, 10 and so on. So in previous lecture we have discussed about definition of function. What is meant by function? So in that lecture we just write definition on a board, and I think so you wrote it. So student, today we revise that definition, then some examples, and what is meant by range, what is meant by domain, and what is meant by codomain. Some definition about the function. So in previous lecture we have discussed f be the function such that from set A to B. Function क्या है? What is the function? Function is a correspondence mapping. Function is the correspondence between two sets A to B. A and B both are non-empty sets. Every element of the set A associate to element of B, an element of B or some elements of the B, no problem. So every element of set A associate to one and only one element of B. यह हमारा definition था और हमने कुछ example पे discuss किए थे और कुछ example हम यहाँ discuss करने जाएंगे. Suppose example, let B be the set or M be the set of mains. ठीक है, set of mains. अब उसमें ये set of mains है, इसमें suppose स्मॉल लेटर लिखा हूं मैं यहाँ पे M1, M2, M3, M4, M5. This is a 5 person, 5 mains, 5 person. या मेन से भी अच्छा रहेगा पर्सन. चलो हम यहाँ पे पर्सन लिखते हैं. P सेट ऑफ पर्सन्स. This is the P1, this is the P2, this is the P3, this is the P4, this is the P5. ठीक है. और दूसरा सेट है कैपिटल V, that is a set of villages. Set of villages. Set of villages, we take here 6-7 villages. This is V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. So P be the set of persons and V be the set of villages. यहाँ पे A to B है, तो A की जगह मैंने लिया है P और B की जगह सेट लिया हम लोगों ने V.
So P indicates that person, V indicates that villages. So we know that every person have a village. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्सन तो है लेकिन उसे विलेज है ही नहीं. ठीक है, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे. ये है अपना सेट ऑफ पर्सन और ये रहा अपना सेट ऑफ विलेजेस. So this is a P1, this is a P2, this is a P3, this is a P4, this is a P5. This is the V1, this is the V2, this is the V3, this is the V4, this is the V5, this is the V6, this is the V7, and so on. So I consider it that P1 with the person belongs to the village V2, P2 with the person belongs to the village V6, P3 with the person belongs to village V1, P4 with the person belongs to village V6, and P5 with the person belonging to the place V3. So dear friend, we are going to some conclusion. Firstly, be carefully see this. So here, every element of the set P associate to one and only one element of the set V. हर एक पर्सन को विलेज है. P1 पर्सन V2 से बिलोंग करता है, P2 पर्सन V6 से बिलोंग करता है, P3 पर्सन V1 से बिलोंग करता है, P4 पर्सन V6 से बिलोंग करता है और P5 पर्सन V3 से बिलोंग करता है. सो P सेट में जितने एलिमेंट है उसका हर एक एलिमेंट इधर एंगेज है. तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जो V से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, लेकिन V में कुछ एलिमेंट्स है जो किसी से एसोसिएट नहीं है. फॉर एग्जांपल V4 एंड V5. दैट मीन्स V4 एंड V5 आर द विलेजेस हैविंग नो पर्सन इन द सेट P. उसका कोई भी सेट P में नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है. So here we point out some important points, that is, in the definition of function, first point, every elements of a set A associates with one and only one element of B. P1 एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, P2 एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, P3 एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, P4 एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, P5 एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वन मैन हैविंग टू विलेजेस. इट इज नॉट पॉसिबल. P1 associate to V2 and P1 associate to V3. P1 associate to V2 and P1 associate to V3. अब ये तो पॉसिबल नहीं रहेगा क्योंकि वन पर्सन कैन नेवर हैव two villages related to two villages. So this is not possible. So P1 only associate to only one village, P2 one village, P3 one village, P4 associate to one village, P5 associate to one village. So like that. That means ये जो सेट A है जिसे हम P बोल रहे हैं, so every element of the set A associate to one and only one element of the B.
So this is the definition. We observe this one point, that is every element of the set A associate with one and only one element of B. लेकिन B सेट में जो एलिमेंट है दैट इज B इज इक्वल टू V, यहाँ पे V6 जो विलेज है, यहाँ पे दो लोग बिलोंग करते हैं, P2 और P4, मतलब 2 और मोर देन 2 पीपल को वन विलेज हो सकता है. मोर देन 2 और 1 और मोर देन 1 पीपल्स can belongs to one village, right? But one person cannot belongs to one or more villages. Remember these things. तो यहाँ पे जो एलिमेंट है V6, इसे 2-3 एलिमेंट एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, no element left in A. No element left in A. A में का कौन सा भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं हुआ है, बट इन B some element may be left, but in B some element left from mapping. Like this? Okay. तो B में सम एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन A में एक्स्ट्रा एलिमेंट होना अलाउड नहीं. अगर इस तरह की मैपिंग है तो उसे हम बोलेंगे, मतलब इस तरह का जो मैच है इसे हम बोलते हैं मैपिंग, और इसे हम बोलते हैं फंक्शन. अगर इसमें मैं कोई एलिमेंट ऐसा लेता हूं, सपोज P6 जो किसी भी V1, V2, V3 या V6 तक बिलोंग नहीं करता, तो वो सिचुएशन या वो मैचिंग मैपिंग नहीं रहेगा. ओके. So this set A is called as domain. ये जो फर्स्ट सेट A है इसे हम बोलते हैं डोमेन. इन मैपिंग F such that A to B, ये जो A सेट है इसे कहेंगे हम डोमेन. What is the domain? In function F such that A to B, then set A is called domain. Then what is this? This is the codomain. This is a codomain. Totally set B is codomain. ठीक है. तो ये रहेगा डोमेन और ये रहेगा कोडोमेन. So if F such that A to B is any mapping, any function, then set A is called domain and the set B is called codomain. Now we are going to discuss very interesting concept, and that is range of function. Range of function. So range of functions. Range of function. तो range of function is subsets of codomain. रेंज ऑफ फंक्शन में सिर्फ उस एलिमेंट को लेना है जो एलिमेंट किसी से एसोसिएटेड है. जैसे कि यहाँ जो सेट है V इज इक्वल टू B, V सेट है, इसमें रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, अब जितने एलिमेंट एसोसिएट है, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 6, ओनली 4 एलिमेंट्स एसोसिएट है. तो ये जो V4 और V5 विलेजेस है, ये जो एलिमेंट है ये तो किससे एसोसिएट है ही नहीं.
तो ये एलिमेंट रेंज में नहीं आएंगे। तो ये रहा रेंज ऑफ फंक्शन। इसे मैं आर से डिनोटेट करता हूं, आर फॉर द रेंज ऑफ फंक्शन। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन दैट इज बी, इसका ये क्या रहेगा, सबसेट रहेगा रेंज। अब यहां पे और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये तो हो गया रेंज ऑफ फंक्शन, ध्यान में आया होगा आपके। इमेज, अब ये जो P1 है, P1 जिस विलेज से बिलोंग करता है उसे कहते हैं इमेज। देखिए जैसे P1, इमेज ऑफ P1, इमेज ऑफ P1 इज V2, इमेज ऑफ P1 इज V2। P1 V1 विलेज से बिलोंग करता है, तो P1 का इमेज V2 रहेगा, V2। अब P2 एलिमेंट है, सो इमेज ऑफ P2, तो P2 जिस विलेज से बिलोंग करता है, P2 बिलोंग टू V6, तो V6 क्या रहेगा, इमेज। So image of P1 is V2, image of P2 is V6, image of P3 is V1, image of P4 is V6, image of P5 is V3। इस तरह से मतलब डोमेन में जो एलिमेंट रहते हैं, एलिमेंट इन द डोमेन possesses images, और जो एलिमेंट को डोमेन में है उनकी डोमेन में प्री इमेज रहती है। फॉर एग्जाम्पल प्री इमेज ऑफ V2 इज P1, V2 का प्री इमेज P1 है, V1 का प्री इमेज P3 है, V6 का प्री इमेज P2 है। मतलब प्री इमेज को डोमेन के एलिमेंट की डोमेन में रहती है, और इमेज डोमेन के एलिमेंट की कोडोमेन में रहती है। इमेज और प्री इमेज कोडोमेन के एलिमेंट की डोमेन में रहती है, दैट इज इमेज एंड प्री इमेज, एंड दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। सो स्टूडेंट, वी डिस्कस्ड हियर revision of definition of function. This is a particular example, set of persons and set of villages. There is some important point according to definition. What is meant by range? What is meant by domain? What is meant by codomain? And what is meant by images? What is meant by pre-images? Some we take numerical example. Let n be the set of natural number. N be the set of natural number, and W be the set of one number. Both sets are infinite. Both sets are infinite. So this is the set of natural number. This is the set of whole number. No problem. Or set we can choose in 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like this. Continue. It is continuing in this way. तो हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम n टू w, जिसे हम जनरली इंडिकेट करते हैं a टू b. सो a इज n एंड b इज w. और हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एफ बी द फंक्शन फ्रॉम n टू w, बट इट इज कन्वेंशन दैट वी ऑलवेज इन द डेफिनेशन वी हैव यूज a एंड b.
A and B name. Okay, no problem. Then I take f of x is equal to 2x plus 1. Now what is meant by 2x plus 1? 2x plus 1, it is a rule. Associate the element of n. Associate the element of n with w by using this rule, and this rule is nothing but function. जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में फ्रॉम द सेट पर्सन टू फ्रॉम द सेट विलेज मैपिंग की थी. दैट मीन्स P1 एलिमेंट का विलेज V1 V2 था. ठीक है. दैट मीन्स विलेज ये जो फंक्शन था, व्हाट इज द रूल इन दैट फंक्शन? देयर इज सम रिलेशन. व्हाट्स रिलेशन? पर्सन हैविंग विलेज. In P there is a number of person, and in the set V, person belongs to that villages. So here there is one rule. F of x is equal to x plus 1. So if I put a f of 1, I take this 1. So 1, if we take 1, so 2 into 1 plus 1 is equal to 3. तो ये 2 जो एलिमेंट है किससे एसोसिएट रहेगा? 3 से एसोसिएट रहेगा. So image of 1 is 3 and pre-image of 3 is 1. Again, if we take 2, so 2 into 2 plus 1 is equal to 5. तो ये 2 रहेगा 5 से एसोसिएट. Then when I choose 3, f of 3 is equal to, so 2 into 3 plus 1 is equal to ये 7 रहेगा. 3 रहने के बाद ये 7 रहेगा. So in this way, every element of the set n, every element of the set n, ये W के एलिमेंट से, एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है एट अ टाइम. W में कुछ एलिमेंट है जिसे प्री इमेज नहीं है, लेकिन n में जो एलिमेंट है उनको प्री इमेज है ही. Remember this thing. And such a type of mapping, such a type of this matching is nothing but the function. So dear student, जैसे भी हम आगे डिस्कस करते जाएंगे वैसे एग्जाम्पल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे. एक्चुअली all these are our part of syllabus, no problem, but it is basic. It is a basic because some parts of this we have already discussed in 11-12 standard. So this is a particular example. We can take more and more examples. We can take more and more examples. So I suggest you visit our library, take books and try to read it, try to understand more and more problem. So in next lecture we discuss about types of functions. Thank you.